Hi Subhash, hi Jay. My voice is audible? Okay, you can unmute yourself or you can reply me on the chat box. My voice is audible? Jay and Subhash, my voice is audible? Okay, Yes, sir, it is audible. it is audible. Okay, Host is not allowing to unmute people. okay. Now I've changed the setting. Now you can unmute yourself. Yes. Okay, Jay, can you hear me? Jay, my voice is audible to you? Jay, I can't hear you. Jay, you can reply me on the chat box. Your voice is not audible to me. Jay, please reply me on the chat box or try to adjust your mic. Okay, because you're unmute now. Yeah, I got your message. Okay, Jay, you're from which school? Jay, you're from which school? Okay, so Jay, we have started Trigo in this batch. So आपका मिस हुआ है, वी विल अरेंज ए बैकअप क्लास फॉर यू, ठीक है? बट आज और कल ट्राई कीजिए जो भी समझ में आ सकता है। प्रॉब्लम आपको होगी क्योंकि आपके स्टार्टिंग का मिस हुआ है। आई विल अरेंज द बैकअप, ठीक है? आज ट्राई कीजिए आपको जितना भी समझ में आता है। ओके सुभाष, लास्ट क्लास में कहाँ थे? सर मैंने लास्ट क्लास सुबह वाले टाइम हुई थी 9 बजे वाली, वो वाली क्लास नहीं ली थी मैंने। फिर उसके वीडियो लेक्चर्स कुछ चेक किया आपने? नहीं, वो मैं Hello. हेलो, या हाय जय, या नाउ यू आर ऑडिबल। जय, फिर आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। Hello. हेलो, जी जय। सो यू आर फ्रॉम एपीजे स्कूल नोएडा। ओके जय, लास्ट किसी भी एग्जाम में आपके कितने मार्क्स थे इन मैथ्स? सर कोई एग्जाम हुआ नहीं है वैसे। इन टेंथ। सर 10th में 25 में से 16 आए थे मेरे। ओके 69। ओके, नो इशू। और कोई चैप्टर जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है? सर ये एक 10th पे ट्रिगो था वही था, और सरफेस एरिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जय, इसीलिए हमने ट्रिको स्टार्ट किया था क्योंकि हम नॉर्मली 1 मंथ करते हैं ट्रिको, ठीक है? नॉर्मली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, सो कोई इशू ओके नहीं, सर। बट अभी आपका स्टार्टिंग मिस हुआ है काफ़ी, ठीक है? तो आज हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, बट नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूँगा, बैकअप में अरेंज करता हूँ ताकि आपको जो मिस हुआ है उसको हम कवर करें, ठीक है? ओके, तो बाद फ्रॉम नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्लास मिस होती है ना, सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मिस्टर सर फॉर द वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि रिकॉर्ड हो जाते हैं लेक्चर्स, सो ही कैन प्रोवाइड यू। ठीक है सुभाष? यस सर। ओके, सो टिल द टाइम हम अगेन रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो हमने आपके साथ जो डिस्कस किया था दैट इज़ अबाउट द एंगल मल्टीपल ऑफ 90, और हमने डिस्कस किया था इवन ऑड होता है देन देयर विल बी, इन केस ऑफ ऑड देयर विल बी चेंज, इन केस ऑफ इवन देयर विल बी नो चेंज। तो उसमें कोई डाउट है सुभाष आपको?
No, sir. नो डाउट। ओके, तो जय फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ दैट वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, है ना? 10th में आपने किया था, दैट Yes, sir. 4 quadrants. Okay, so this is 0 degree and this you know that this is 90 degree. Okay, 90 होता है, so ये कितना हो जाएगा एंगल? 90, ठीक है जी? Yes, sir. Okay, then this is again 90, so add 90 in this, तो ये कितना हो जाएगा? 1 80. next. 180. Okay, so again add 90, you will get a 270, and 270. 90 you will get a 360. 360. So we have a 4 quadrants. In class 10th आपके पास जो भी angles आ रहे थे, that is in the first quadrant. So in first quadrant all the ratios are positive. ठीक है? In the first quadrant all the ratios, your sine, cos, tan, cot, all are positive. And the second quadrant, sine is positive and its reciprocal, that is cosic. These two are positive. And the third one, tan is positive and its reciprocal, that is cot. These two are positive. And in the fourth quadrant, cos is positive and sec is positive. ठीक है? तो जय ये पार्ट आपका मिस हुआ है, इसको हमने बहुत डिटेल में किया था। ठीक है, तो मैं अभी एज अ समरी आपको बता रहा हूँ, बट कोई इशू नहीं है। इन बैकअप क्लासेस वी विल अगेन कंप्लीट दिस वन। ठीक है, सो in different quadrants we have different positive values of trigonometric ratios. Okay, सुभाष इसमें डाउट नहीं था, तो सुभाष फिर क्वेश्चन ट्राई किए थे, द एंगल विच आर ग्रेटर देन 90। Yes, sir. किए थे. Okay, then try this question. कोई डाउट नहीं है, रेडियन में भी कोई डाउट नहीं है? No, sir. Okay, then tell me this. First is sine 7 pi by. First, try to do this question. I'm taking a break of 1 minute. Yes, sir. Sir.
ओके सुभाष एनी आइडिया कैसे कर सकते हैं? सर साइन, सर इसमें क्या निकालना था हमें? ये रेडियन वाला एंगल ना, साइन 7 पाई/4। रेडियन में यस सर। सर तो इसका वो वाली वैल्यू सर, इसकी मतलब रियल वैल्यू 180 अपॉन इंटू पाई, 180 अपॉन पाई कर देंगे इंटू, तो सर इसकी रियल वैल्यू हो जाएगी 7 × 45 सर, विच इज 7। बट सुभाष उससे ना हमारी कैलकुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अब नॉर्मली 11th और 12th में जो एंगल्स होंगे मैक्सिमम आर इन रेडियन। सो हम क्या करेंगे, अब हम यूज टू हो जाएंगे रेडियन से। ठीक है, मैथड इज करेक्ट, यू कैन कन्वर्ट द रेडियन इनटू डिग्री एंड फर्दर यू कैन सॉल्व इट, बट बेटर ये कि हम इसको रेडियन में ही सॉल्व करें। ओके, सो सुभाष हमने आपसे ये कहा था कि इफ़ यू हैव अ 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, ठीक है, देन डिपेंड्स ऑन एन यू हैव अ odd or even concept. So in place of 90 we can write pi by 2, यस सर। है ना? अब n अगर हमारे even होगा then there will be no change, and if n is odd then it will change. ओके, सो सुबह जहाँ समझ में नहीं आया बता दिएगा, क्योंकि आपको पता होगा इसलिए मैं डिटेल में इसमें नहीं बता रहा हूँ। now सुभाष अगर हमारे पास 180 है, 180 into n plus minus theta, then can you tell me that ratio will change or not? सर ये इवन है, इसलिए रेशियो चेंज नहीं होगी। होगी। नहीं होगी, नहीं होगी, इवन है ना, 180 है, so 180 तो ultimately will give you 90 into 2. यस सर, यस सर, यस सर, Now यस। n हमें चेक ही नहीं करना, अगर 180 है then we know that 90 into 2 आएगा, and 2 आ गया, it's mean even, so sin remains sin, so it's mean अगर 180 डिग्री आ रहा है then हमें कुछ नहीं करना, हमें n भी even चेक नहीं करना, हमें पता है this will even, so ratio will remain the same. So हम क्या करेंगे, 180 means pi, pi 180 होता है ना सुभाष, यस सर। so रेडियन में अगर हमारे पास pi आ रहा है then ratio will remain the same, और अगर pi by 2 आ रहा है then we will check the sign. If this is odd, sign will change into cos. If this is even, then sign will remain sign. Clear हुआ सुभाष? यस सर। ठीक है, तो रेडियन में हम याद रखें पाई बाई 2 आएगा तो हमें n चेक करना है, n is odd will change, n is even no change. बट अगर हमारे पास पाई आ गया then there will be no change, क्योंकि पाई हमें 90 into 2 देता है and 2 is a even. इतना क्लियर है सुभाष? यस सर। Okay, so our question is 1 sine 7 pi by 4. This is our question. Okay, in these types of question, I will suggest you to break this angle into a acute angle. एक acute angle होना चाहिए, एक कुछ और angle होना चाहिए, फिर उसको हम further solve करेंगे। ठीक है, नॉर्मली ये लॉजिक हर जगह अप्लाई हो जाता है, जहाँ नहीं होगा we'll move to some other types. ठीक, तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, 7 पाई को अगर हम ब्रेक कर देते हैं, सपोज 6 पाई प्लस पाई बाय 4, इतना ठीक है सुभाष? यस सर। इस 4 को सेपरेट कर देते हैं, सो दिस विल गिव यू 6 पाई बाय 4 एंड प्लस पाई बाय 4। ठीक है, जो मैंने एक्यूट की बात की थी दैट इज दिस, यहाँ से तो हमें नहीं पता चल रहा है बट दिस इज एक्यूट एंगल। ठीक, नाउ कैंसिल दिस विल गिव यू 3 पाई बाय 2 एंड प्लस पाई बाय 4। इतना ठीक है सुभाष? यस सर। सो पाई बाय 2 मीन्स 90, यस ये वही कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये क्या है, दिस वन इज ऑड और इवन? सर, ये ऑड है। ऑड है, देन साइन विल चेंज इनटू सर कॉस। cos, कितना हो जाएगा, cos pi by 4. Now we have to check the quadrant. Okay, so Subhash, this is 0 and this is 90. 90 का मतलब pi by 2. This is 180. 180 means pi, and this is 270. 270 means 3 pi by 2, and this is 360 means 2 pi. So 3 pi by 2 plus pi by 4 lie in which quadrant? यस सर। 3 pi by 2 plus pi by 4 lie in which quadrant? सर 180, सर 90 to 180 के बीच वाले में। 90 नहीं Subhash, 3 pi by 2 कहाँ सॉरी गया? सर, सर 270, 270। 270 and 660. So किस सर quadrant? सर थर्ड और मतलब एग्जैक्टली मिडिल में है। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट।
सर फोर्थ भी हो सकता है और 180 वाला भी तो हो सकता है। सुबह 3 पाई/2 का मतलब 270 दिस वन। यस सर। सर तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, ये 180 वाले में भी आ रहा है और उसमें भी तो आ रहा है फोर्थ में भी। इसमें अगर आपने पाई/4 ऐड किया तो एंगल किस क्वाड्रेंट यस सर, यस सर, यस सर। में आएगा? सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओरिजिनल रेशियो हम चेक करते हैं। सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओरिजिनल द साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सर सर पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट सर दिस नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ऑल स्कूल टू कॉलेज, so this यस is सर। सर नेगेटिव। so this is equal to -1/√2। ठीक है, तो वो मेथड भी ठीक है जहां आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे, बट प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस इन रेडियन, क्योंकि अब धीरे धीरे सब कुछ आपको रेडियन में ही मिलेगा 11th। ठीक है, तो कैसे करना है, इसको ब्रेक कर देना है। फाइनली वी नीड एक्यूट एंगल, तो उसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि ये कैंसिल हो जाए। तो 6 पाई प्लस पाई, सो ये हमारे पास। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, प्लीज ट्राई दिस। मैं जब तक जय से फिर बात कर रहा हूँ, जय ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर वो ऑल स्कूल टू दिस वन, ऑल आर पॉजिटिव साइन। यस सर। ठीक है, क्योंकि जय इसमें हमने एक पूरी क्लास ली थी, तो अभी सिर्फ एज अ समरी आपको मैंने बताया, तो इतना क्लियर नहीं हुआ होगा। बट 10th में आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया था, सो ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। 11th वी हैव अ डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, डिफरेंट में साइन इज पॉजिटिव इन द सेकंड वन, देन tan एंड देन cos। ठीक है, हम ऐसे करते हैं इसको। सो फर्दर मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, हाँ सुभाष, ये हो गया क्वेश्चन। एक सेकंड सर। हाँ सुभाष, एनी डाउट? नो सर। ओके, सो व्हाट्स द आंसर? सर अगर हम लोग उसे पाई को साइड में कॉमन लेंगे तो सर वो पाई बाय सर 6, सर मतलब हम लोग 6 पाई अपॉन प्लस पाई अपॉन 6। यस सर। सर उसके बाद में सर 6 पाई की वैल्यू। पाई प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा। यस सर।
ओके सो पाई मींस 180. सो 180. पाई जब भी आता है then कोई चेंज नहीं होता. You will directly write cos pi by 6. यस सर. सर और इसके सर वैल्यू लाया करते हैं सर 180 से आगे वाले क्वाड्रेंट में सर, जिसमें से tan माइनस के अंदर होता है. 10 पॉजिटिव यस सर. सर तो cos माइनस में आ जाएगा. नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है 30 हो गया माइनस रूट 3 पाई 2. यस सर. बिल्कुल ठीक है सुभाष. Then third is try this sine 25. Try this question. सर पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? That is 45. सर -1/√2. माइनस 1/√2. सो इसको आपने ब्रेक किया 24 प्लस पाई बाय 4. ओके देन दिस इज इक्वल टू साइन और ये 24/4 हो गया 6 पाई प्लस पाई बाय 4. 6 पाई इज नो चेंज सो साइन पाई बाय 4. नाउ दिस 6 पाई लाइन विच दिस इज 0 एंड 2 पाई तो 4 पाई भी यहीं होगा 6 पाई भी यहीं होगा. ठीक है 6 पाई प्लस पाई बाय 4. सो दिस लाइन विच क्वाड्रेंट सुभाष? सर इन द थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड में नहीं होगा सुभाष. ऐसे याद रखें सुभाष दिस इज 2 पाई भी यही होगा. ठीक है 4 पाई भी यही होगा 6 पाई भी होगा तो ये बॉर्डर मिल गया. यस सर. इसमें 45 अगर ऐड किया तो किस क्वाड्रेंट में आपका एंगल आई करेगा? सर 4. नो व्हाई फोर्थ? इन दिस वन 6 पाई ये था 6 पाई में 45 ऐड किया देन व्हिच क्वाड्रेंट? सर फर्स्ट. फर्स्ट वन. सो दिस इज 1/√2. ठीक है सुभाष. यस सर. ओके ठीक है. सो आई गेस सुभाष समझ में आया होगा. देन अगेन ट्राई टू डू द क्वेश्चंस और फिर जो भी डाउट्स होंगे आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके देन फिर मुझे आपसे डिस्कस करना था एक पॉइंट. अगर सुभाष यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी. नो सर. नो सर. Okay. So, Jay, this is 0 degree. Then again, can you tell me what is this? Jay, this is 90 degree. Yes, sir. And this one? 980. And this one is? 180. 180. And this one is? 270. And this one? 360. 360. Okay. Now good. Now, Jay, can you tell me what is the value of sine 0? Sine 0 is 0? Not defined. No, sine 0 is 0. Okay. Yes, sir. Sine 0 is 0 here. Then you have cosec 0. Cosec 0 क्या होता है? Not defined. This is not defined. Good. Then you have tan 0. Tan 0 क्या होगा? 1. Tan 0 is 0. Okay. Then you have cot 0. Then what is cot 0? Cot 0 will be Not defined. not defined. Okay. Then you have this cos 0. Cos 0. 1. 1. Then you have sec 0. What is sec 0? Not defined. Sec 0 is what? 1 by cos. I know. Yes, sir. Sec 0 is 1 by cos. And 1 by, we know that cos 0 is 1. So this is 1. Okay.
सो जीरो की वैल्यूज आपको पता है, साइन जीरो, कोसेक जीरो, टैन जीरो, कॉट जीरो, कॉस जीरो एंड सेक जीरो. नाउ अब सुभाष जीरो में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट द न्यू थिंग फॉर यू इज 180. अब क्या करेगा, हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा साइन 180. ठीक है, तो हमें कैसे रिटेन करना है, कैसे हमें याद रखना है इसको, उसके लिए कैसे करेंगे सुभाष? चेक द, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड. ओके, सो राइट साइड में जो भी पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव हो जाएगा. So remaining will remain the same. So sine 0 is 0, sine 180 will be 0. Cosec 180. Subhash, can you tell me what is cosec 180? Zero. Not defined. Fine, sir. ठीक है, the values which are 0 or not defined on the right side will remain the same on the left side. So tan 0 is 0. Again, tan 180 is 0. Zero. Cot 0 is not defined. Similarly, cot 180 is not defined. Not defined. Okay, only the changes which will occur will be at this one. Cos 0 is, Cos then cos 180 minus 1. is equal to minus 1. Good. हाँ जी Sec Sec 180 is equal to minus 1. again minus 1. Okay, so Subhash, ये clear हुआ? जीरो आपको पता है, इफ इन एनी क्वेश्चन यू विल गेट द 180, तो उसको कैसे याद रखना है? सेम जो जीरो में होगा वो सब रहेगा, बस जहाँ 1 था वो नेगेटिव हो जाएगा. तो साइन 180, कॉस, टैन, कॉट सेम रहेगा जो जीरो में हम कर रहे थे. Only the thing will change will be cos and sec. Okay. Now Subhash, आप मुझे please बताइए that what is sin 90? Subhash, what is Sir, sin sine, 90? sir, sine 90 is, sir, 1. 1. Good. What is cosec 90? Sir, infinity. Cosec 90 is Sir, again, yes, sir, sir. Sorry, yes, sorry, sir, 0. no, 1. अच्छा, cosec 90. Okay, sir, sorry, sir. मैं cos समझ गया. Okay, ठीक है. Cosec is 1 by sine, so हाँ, sine. yes, yes, sir. So this. Next, after this, cos 90 is what? Sir, this is, sir, 0. 0. Good. Next is sec 90. This is what? Sir, this is infinity. Not defined. Next is tan 90. This is what? Sir, tan 90 equals to, sir, not defined. Then cot 90 is what? Sir, 1 by not defined. This is 0. Sir, Right. 0, yes, sir. So 90 हमें पता है. Now अब 270 के अगर हमें values find करनी है, Subhash, then what is sin 270? Sir, sir, sin 270 equals to Minus 1. Minus 1. J. Good. ठीक है. Upper part is positive, so the lower part will be negative. Negative. Right hand side is positive, so the left side will be negative. So sin 270 is minus 1. Then we have cosec 270. So this is equal to again minus 1. क्योंकि यहाँ दोनों 1 थे, so in this part ये दोनों negative हो जाएंगे. Next we have cos 270. This is 0. Then we have sec 270. This is not defined. Again we have tan 270. This is not defined. And we have cot 270. This is 0. Okay, same values रहनी है जो upper part में थी. Change कहाँ होगा? सिर्फ 1 में change हो जाता है minus 1. Similarly cos में भी क्या होगा? Change होगा 1 में. So cos 180, sec 180 minus 1 हो जाएंगे. Remaining will remain the same. So अब वो आपसे कोई भी अगर value पूछता है on these borders, जैसे 90 पूछा उसने, फिर उसके बाद उसने आपसे 3 pi by 2 पूछा, फिर उसने 5 पूछा, 7 पूछा, 100 पूछा, 99 पूछा. So just you have to check कि किस border पे एंगल आ रहे हैं. जिस border पे आएगा, you know the value. ठीक है. सुभाष एंड जय, इतना क्लियर हुआ? yes, sir. ओके. सो जय, आई गेस आपको भी क्लियर हो गया था. सो प्लीज नोट डाउन दिस. ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्योंकि आप भूल जाएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180. Yes, sir. Okay, so please note down this. We will start next.
जब नोट हो जाए देन प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. सुभाष एंड जय हो गया नोट. कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट नाउ? No, sir. 2 minutes. ओके ओके. प्लीज लेट मी नो है ना जब कंप्लीट हो जाए. Jay and Subhash completed. Subhash and Jay complete हो गया. Yes, sir. Okay. Subhash complete हो गया. यस सर. ओके ओके ठीक है. सो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. ओके सुभाष नाउ यू विल ट्राई टू डू द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एंड असाइनमेंट्स और आई गेस आपके फिर भी डाउट्स होंगे. ठीक है तो उसको हम कल डिस्कस करते हैं. ओके सर. ठीक है. ओके और निरकेश सर ने कोई असाइनमेंट शेयर किया आपसे भी? नहीं सर. अच्छा मैं उनसे आज कहता हूँ. ठीक है वो शेयर करेंगे. उसमें जो क्वेश्चंस हैं प्लीज ट्राई टू डू दैट. ठीक. नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
सुभाष कोई डाउट तो डिस्कस नहीं करना है? No, sir. So our next topic is trigonometric ratios of sum and difference of angle. Okay, trigonometric ratios of sum and difference of angle. So our first formula is sine A plus B. Okay, this is sine A cos B plus cos A sine B. So whenever you got you will get a question like this, sine A plus B, then the formula which you will use is sine A into cos B plus cos A into sine B. Okay, this is the formula. Sine A plus B is equal to sine A cos B plus cos A sine B. So on the basis of this, हमारे पास questions कैसे आते हैं? For example, वो question आपको दे देगा sine, find the value of sine 75 degree. So हमें जो angle पता है, that is of standard angles, है ना? For example, we know the value of 0, we know the value of 30, 45, 60 and 90. ठीक? But 75 हमारे standard angle नहीं है, so we don't know this. So in these types of questions आप क्या करते हैं? You will break this angle into two angles so that उनकी values आपको पता होनी चाहिए. So can you tell me 75 को हम कैसे break करेंगे? सुभाष एंड जय 75 टू एंगल्स में ब्रेक करने हैं जिनकी वैल्यू हमें पता हो. Sir, 45 45 गुड, and 30. 45 एंड 30 गुड. ठीक है जय, क्लियर हुआ ये? जय ये क्लियर हुआ? 75 को हमने ब्रेक कर दिया 45 एंड 30 में. जय यू आर ऑन म्यूट. Yes, sir. ठीक है, नाउ अब क्या करना है हमें? अब देखिए ये फॉर्म हो गया साइन ए प्लस बी फॉर्म. सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. तो फॉर्मूला क्या था? साइन ए इन प्लेस ऑफ ए वी हैव 45, in place of b we have 30, so we can use this formula sine 45 cos 30 cos 45 sine 30. Okay, now you can अभी ये नोट नहीं करना है. Now you can put the value. Sine 45 is 1 by root 2 and cos 30 is root 3 by 2, cos 45 is 1 by root 2 and this is 1 by 2. So finally take a LCM and you will get root 3 plus 1 by 2 root 2. This is the final answer. Okay, so this formula can be used in these types of questions. So formula clear is sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. Okay. Now similarly we have another formula sin A minus B. So our formula is sin A cos B minus cos A sin B. Okay, so difference क्या होता है? सिर्फ एक नेगेटिव साइन आ जाता है. Remaining formula will be same. Third, we have this formula cos A plus B. So this is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Okay, so यहाँ क्या होता है हमारे पास? साइन में चेंज होता है. If this is positive, this will be negative. साइन में ठीक था, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव. कॉस में चेंज हो जाता है. दिस इज पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव. एंड फोर्थ इज इफ दिस इज नेगेटिव cos A minus B, then this will be equal to cos A cos B plus sin A sin B. ठीक है. फिफ्थ इज फॉर्मूला ऑफ tan. ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू है. अभी जस्ट नोट डाउन द फॉर्मूलेस. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन आप यूज टू होंगे फॉर्मूलेस. ठीक है. tan A plus B is tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan.
Okay, tan A plus B is tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B. 6 is tan A minus B. This is equal to tan A minus tan B by 1 plus tan A into tan B. Okay, tan A plus B is tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B, and this is minus n plus. So please note down this. कोई परेशानी नहीं होना. I know that formulas are complicated for you. क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे फिर आपको समझ पाएंगे formulas. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस. Jay and Subhash, complete हो गया. Can we start next? No, sir. Sir, done. Done. Okay, Subhash, completed. Yes, sir. Okay. So these are 6 formulas. Then we have 2 more formulas of cot A plus B. So इसको learn कैसे करना है? First write the denominator cot B plus A. Do not write A plus B, write B plus A. Then write cot A, cot B minus 1. Okay. So in this case, यहाँ से start करना है cot B plus A, then cot A, cot B minus 1. Then सर ये फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला है. Then cot A minus B. अब क्या करना है? फिर वैसे ही करना है. Cot B minus cot A से start करना है. ठीक, ऐसे ही इसको लर्न करना है. ठीक है, A प्लस बी लर्न किया तो जब नेगेटिव आएगा ना वहाँ मिस्टेक के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको लर्न कीजिए ऐसे cot B plus cot A. Then cot A cot B, अब ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, सो फॉर दिस केस वी हैव 8 फॉर्मुलेस. प्लीज नोट डाउन दिस. फिर कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं. Done. सुभाष हो गया कंप्लीट? सर एक सेकंड सर. Yes, sir, done. Done? Okay, so try this question.
question is find the value of the following. Of the following. Okay. So first is sine 15 degree and second is cos 15 degree. Okay. So sine 15 degree, can you tell me two angles which can be used for this question? Jay and Subhash, two angles which can be used to solve this. क्योंकि 15 is not a standard angle, हमें नहीं पता. Yes, sir. How can we break this into two angles? 15 degree. Yes, sir. जय कैसे break कर सकते हैं इसको? 10 plus 5. बट हमें तो 10 की भी वैल्यू नहीं पता, sin 10 की वैल्यू नहीं पता हमें sin 5 की भी नहीं पता है ना. सो वी हैव तो टू सर 9 sin 65. sin 65 भी नहीं पता हमें, है ना. हमारे पास कौन सी वैल्यूज होती हैं? 0, 30, 45, 45, 90, 90. बस इतनी. 60 और 90. 60 एंड 90 तो 15 नहीं आएगा. सर sin 30 minus 45 या 45 minus 30. बिल्कुल ठीक है जय. sin 45 minus 30. गुड. ठीक है सुभाष, ये यूज कर रहे हैं अभी. Yes, sir. Okay, good. So Jay, you have the formula of sine. Put that and tell me the final answer. जब हो जाए then please tell me the answer. कोई doubt है तो भी please बताइए. Excuse me, sir. So what is the value of sine 45? Sin 45 is 1 by root 2.
Excuse me, sir. Sir, do we have to rationalize the answer? If in the denominator there is a root, then you need to rationalize it. Sir, the first one's answer is, sir, under root 6 minus under root 2 upon 4. Let me check this. So this is sine A cos B minus cos A sine B. Okay. So this is 1 by root 2 and this is root 3 by 2 minus this is 1 by root 2 and you get a 1 by 2. So your final answer is 2 root 2 root 3 minus 1. Okay, so for this you have multiply with root 2. So you get root 2 root 3 minus 1, or you can open the bracket, that's your choice. So even you can write like this. This is 4. Take this, Subhash. Same answer? Yes, sir. Okay. So Jay, do you get the answer? Jay, you are on mute. Hello. Yeah. Jay, are you getting the same answer? Yes, sir. Okay, good. Then please try this second one and tell me the answer of this cos 15 degree. Okay, sir. Jay and Subhash, अगर solve हो गया then please tell me the answer. Yes, sir. So 1 second.
Sir, under root 2 minus under root 6 upon 4. अंडर रूट 2 माइनस नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए. Cos 15 degree means 45 minus 30 degree. Okay, so in the formula of cos we have a positive sign, not negative. है ना, ये change है. Cos 45 into cos 30 plus, ठीक है, this multiply plus sin 45. Sorry, sir. Sir, I made a mistake. Sir, I read the formula wrong. Okay, please correct this. So finally you will get the same answer with the change of sign on. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Jay, are you getting the same answer? Yes, sir. Okay, Jay, good. And try this question, third one, tan 105 degree. Try this question. Sir, what is the value of tan 60? Tan 60 is root 3. Okay. Sir, minus 1 plus under root 3 whole square upon 2. Okay, so your answer is correct. So we will write it 60 plus 45. So this is tan 60 plus tan B by 1 minus tan 60 into tan 45. Okay, so tan 60 is what, root 3 plus 1 by 1 minus root 3. Okay, then you can rationalize this. So this is what, 1 plus root 3. This is 1 minus root 3. And you can multiply this with 1 plus root 3. So this will give you a square plus b square plus 2ab by a square minus 3. So this is 4 plus 2 root 3 by minus 2 minus 2 minus root 3. Okay, this is answer. Subhash, you are getting same one? Yes, sir.
Okay. Good. Shubh, Jay, same answer. Yes, sir. Okay. So I guess formulas समझ में आ गए होंगे that how you have to apply. Yes, sir. Okay. Then we will start the next type. Try this question. Jay, you don't know about the रेडियन, ठीक है. एंगल को हम मेजर करते हैं 2 यूनिट्स. फर्स्ट इज डिग्री जो आप कर चुके हैं, सेकेंड इज रेडियन. रेडियन अभी आपको पता नहीं है, सो जस्ट पुट द फॉर्मूला, टेल मी द फाइनल आंसर. मैं आपको उसका कन्वर्जन बता दूंगा दैट डिग्री में वो सॉरी वो रेडियन में उसकी डिग्री में वैल्यू कितनी होगी. सो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, टेल मी द फाइनल आंसर, उसके बाद मैं हेल्प करता हूँ. Okay, try these two questions, tell me the answer. वन बाय वन मुझे आंसर बताइएगा. फर्स्ट टेल मी द फर्स्ट वन. Subhash and Jay, did you get the first answer? Subhash and Jay, first हो गया सॉल्व. You both are on mute. कर रहे हैं सर, एक सेकेंड. Okay, okay.
सुभाष फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सुभाष एंड जय फर्स्ट हो गया क्वेश्चन. सर जी सुभाष कंप्लीटेड. नो सर ओके कोई डाउट है इसमें? क्योंकि ये इतना लेंथी नहीं है ना सुभाष. देखिए प्लीज वैल्यू क्या निकालनी है? इसमें वैल्यू में देखिए दिस इज ए दिस इज बी. ओके एंड अच्छा मैंने कुछ मिस कर दिया इसमें. सॉरी दिस इज 7 पाई/12. अच्छा इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी. सॉरी दिस इज ए एंड दिस इज बी. सो फॉर्मूला कौन सा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ओके सुभाष ये किसका फॉर्मूला होता है? सुभाष साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? ये सर उसका सर cos साइन सर sin a प्लस a माइनस b का. साइन ए माइनस बी. नाउ व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? सुभाष व्हाट इज ए? सर ये सर 7 पाई/12. 7 पाई/12. व्हाट इज बी? सर पाई/4. 5/4. ओके इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो साइन एलसीएम इज 4 सो दिस इज 14 पाई माइनस कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम ना. 7 पाई/12 माइनस this so 12 7 pi minus 3 pi so this is sine 4 pi/12 which is equal to sine pi/3. Okay now what's the value of sine pi/3? Acha J sine pi/3 means sine 60 degree. Okay so J what is the value of sine 60? J what is the value of sine 60? Hello. G J what's the value of sine 60? 1/√3. √3/2. Sorry, √3/2. ओके नाउ क्लियर हुआ. सुभाष कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? अच्छा एक तो ये मेरी मिस्टेक हो गई थी. ठीक है दिस वाज 12. नाउ सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन sin a cos b plus cos a sin b. नाउ ये किसका फॉर्मूला होता है जय? sin a cos b. सपोज दिस इज a दिस इज b दिस इज a दिस इज b सो sin a cos b plus cos a sin b किसका फॉर्मूला है जय? ये जय किसका फॉर्मूला होता है? ये जय आप म्यूट पे हैं. जय यू आर ऑन म्यूट. Okay, Subhash, can you tell me ये किसका फॉर्मूला है? sin a cos b plus cos a sin b. सर sin a प्लस b का. Sin a plus b. Good. Now, Subhash, what is a? सर पाई/4 सर और b है पाई/12. Good. ठीक है जय आपकी मुझे वॉइस नहीं आ रही थी. So we get this. Now we will take a LCM. So this will give you 3 pi plus pi. And finally you will get sine 4 pi/12. And you get sine pi/3. And pi/3 is again √3/2. Okay, Jay, any doubt in this? Jay and Subhash, any doubt in this topic? Subhash, any doubt? नो सर. Okay, Jay, any doubt in this topic? No, sir. Okay. So please note down the homework. Homework is exercise 3.3, question number 1 to 11. Okay. Assignments मैं आपके साथ कल शेयर करता हूँ.
बट कल तक प्लीज़ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 12। ठीक है, कल हमारी फिर मॉर्निंग में क्लास है एट 9 AM। ठीक है, तो कल 9 AM तक प्लीज़ ये होमवर्क कर लीजिएगा। सिर्फ 11 क्वेश्चन है तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है जय एंड सुभाष। और जय, आपकी बैकअप के लिए मैं अभी डिस्कस करता हूँ निष्कर सर से, सो विल टेल यू टुमारो अबाउट द बैकअप टाइमिंग्स। ठीक है, ठीक है बच्चे, फिर क्लास ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है जय, फिर मैं आपको कल बताता हूँ बैकअप टाइमिंग्स। ठीक है, थैंक यू। क्लास ओवर करते हैं फिर। जय, कोई क्यूरी तो नहीं है? नो सर। ठीक है, फिर कल मॉर्निंग में करते हैं। थैंक यू।